यार सो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। आई थिंक तकरीबन हाँ स्टूडेंट्स तो आ गए हैं, सो आई शुड गेट स्टार्ट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर अब से बेसिकली टू क्वाइट सम एक्सटेंट अब इलेक्ट्रिसिटी का ही काम होता रहेगा। सो इलेक्ट्रिसिटी के ही इंडिविजुअल सब टॉपिक्स एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो दिस बीइंग द फर्स्ट टॉपिक, तो मैं थ्योरी के जरा पॉइंटर्स आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं, वर्डिंग्स मेरे साथ साथ फॉलो कर लो, और एक्सप्लेनेशन पार्ट को पहले करा दूं, फॉर्मूला करा दूं, उसकी एप्लीकेशन करा दूं, फिर आगे प्रोसीड करता हूं। ठीक है यार, स्टेटमेंट देख लेना। सो जो पहली चीज डिस्कस करनी है यार, ऑडियो क्लियर है ना? अनम्यूट करके ही वैसे बता दो। ओके सही है, इट्स ओके सही है। कैसे हो रोहिल भाई? ऑल राइट, सो द फर्स्ट थिंग इज कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो पहले टर्म्स वगैरह एक्सप्लेन कर दूं, और फिर इसकी फॉर्मूला की एप्लीकेशन करा दूं। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between 2 point charges is known to be directly proportional to the product of these charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, so if I assume two charges labeled as Q1 and Q2, and if they are separated by a distance of r, as shown in the diagram, then based on Coulomb's law of electrostatics, the electrostatic force, which can either be attractive or repulsive, is given by the expression force is directly proportional to the product of the two charges, so Q1 times Q2, and based on the wording, inversely proportional to the square of the distance between them. So this is how the relationship can be written. When you remove the proportionality sign, you can introduce a constant. काफी लोगों को constant k की फॉर्म में लिखना कन्वीनियंट लगता है, एंड इफ दैट वर्क्स आउट फॉर यू इट्स फाइन। अगर आपके लिए कन्वीनियंट है, सही लगता है अगर आपको, you can remember the formula as follows: F is equal to k times q1 q2 upon r square. बट आई थिंक मेरे लिए जरा ज्यादा कन्वीनियंट ये होता है कि द कांस्टेंट k is actually equal to this function. So k is equal to 1 upon 4 pi e naught. E naught, which is also called epsilon naught, it is a constant of electrostatics, and this constant is called permittivity of free space. The value of E naught is 8.85 into 10 to the power of minus 12, and its units are farad per meter. तो अगर को तो आपको सूट करता है तो आप के की फॉर्म में लिख दीजिएगा फॉर्मूला, इट्स परफेक्टली ऑल राइट, एग्जाम्स में कोई मसला नहीं होता। बट आई थिंक मेरे लिए जरा ज्यादा कन्वीनियंट है कि इफ आई राइट डाउन द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ के, so since k is equal to 1 upon 4 pi E naught, where the constant E naught is called permittivity of free space as I mentioned, and the value of E naught is 8.85 times 10 to the power of minus 12. So if you substitute the value of k into your main equation, so मैंने substitute किया हुआ है, तो I think वो आप देख लीजिएगा, मैंने k के रिजल्ट को प्लग इन कर दिया है। तो फिर अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आपका फाइनल आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा: f is equal to q1 q2 divided by 4 pi e naught r square. So between the two options, option number 1 versus option number 2, my personal preference would be that you make use of option number 2. Although in exams, they do allow you to use the first option as well. So if the first option kind of works out for you, it's fine. But I think the second वाला option जरा ज़्यादा simplified version है। रोहिल ने जो पूछा है ना, मैं उसका भी आंसर दे दूं। अच्छा रोहिल, बिफोर आई आंसर ना, तुम इसको मैसेज को बेटा प्राइवेटली से चेंज करके एवरीवन पे कर दो, ताकि आपके क्वेश्चंस बाकी लोग भी जो है ना वो फॉलो कर लें। सो पहले आप चेंज कर दो उसको एवरीवन के ऊपर, ठीक है, और मैसेज दोबारा लिख लो ताकि बाकी लोगों की भी स्क्रीन पे आ जाए वो, इफ दे वांट टू सी द मैसेज। फिर मैं आपको आंसर कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू यार। सो यार एग्जाम्स के अंदर
K की value is not given in the exams, but yes, the value of E naught is given in the exams. So one of the reason why I prefer to write down the formula as option number 2 is because के E naught की value question में given होती है, but K की value आपको data booklet में नहीं given होती है. So between the two options, second option kind of seems to be more reasonable. Aisha ने पूछा हुआ है, if in a question we have to write this equation, we can write it either ways, right? Yes. ठीक है, but Aisha do recognize K की value solve करने की जरूरत पड़ेगी ना, तो एग्जाम्स में given नहीं होगी. So फिर आपको K की value kind of learn करके जाना पड़ेगा. तो सेकंड वाला फॉर्मूला थोड़ा सा कन्वीनियंट इसलिए है कि द वैल्यू ऑफ ई नॉट इज ऑलवेज गिवन टू यू इन डेटा बुकलेट. ठीक है, बट नॉनदलेस यू कैन राइट इट डाउन आइदर वेज. नाउ फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है ना, इसकी जरा वर्किंग देख लेते हैं. मुझे दो एग्जांपल्स कराने. ओके, आई थिंक एरोज वगैरह बाकी तो मैंने मिटा दिया. अच्छा, बिफोर आई कंटिन्यू, एज अ साइड नोट लिख लूँ, फिर आगे प्रोसीड करता हूँ. इफ आई आस्क यू, क्या डिफरेंसेस क्या हैं बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स and the electrostatic force? Before I continue further, the differences highlight कर दूं. So gravitational force only attractive. जो साइड नोट लिख रहा हूँ ना, वो बस साइड पर ही लिख रहा हूँ. Electrostatic force both attractive and repulsive. ठीक है, तो एक डिफरेंस आपके पास ये आ गया, और सेकंड डिफरेंस तो बहुत ही ऑब्वियस है. ग्रेविटेशनल फोर्स acts on masses. Electrical force acts on charges. ठीक है, this was as a side note, so this is not my main working. ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है ना, उसकी जरा वर्किंग देख लेना. मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट इरेज नहीं करूंगा, दैट विल सेव मी सम टाइम. मुझे वापस नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन स्टेटमेंट्स वाली चीजें जो है ना, वो फिर इरेज करके दोबारा लिख लूंगा, ताकि आप मेरे साथ साथ फॉलो कर लो. तो लेट्स सपोज इन द डायग्राम you are provided with two charges. Uh, the first charge is 8 microcoulombs. The second charge is 6 microcoulomb, one positive, one negative, and they are separated by a distance of 7 centimeters between them. ठीक है. And the question is asking you to calculate the electrostatic force between them. So before I apply the formula Q1 Q2 upon 4 pi E naught R square, it is important that you recognize one thing. और ये चीज प्लीज याद रखिएगा जो मैं ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ. फॉर्मूला, okay, formula is only meant to give us the magnitude of the force, not the direction. Therefore, ये important है. Signs of the charges is not to be considered. ठीक है, तो जरा वर्डिंग ये प्लीज देख लीजिएगा. The intention of this formula for Coulomb's law is that the formula is only meant to provide us with the magnitude of the force. तो इस फॉर्मूले का मकसद है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करता है, not the direction. Therefore, sign of the charges is not to be taken into consideration. तो जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, तो चार्जेस की पॉजिटिव या नेगेटिव साइन की रेलेवेंस इग्नोर कर दीजिएगा. Like in this case, you can notice
कि द फर्स्ट चार्ज इज +8 माइक्रोकूलम्स, लेकिन जब आप वैल्यू लगाओगे तो सिंपली राइट 8 इंटू 10⁻⁻6। पॉजिटिव साइन इग्नोर कर दीजिएगा। सिमिलरली फॉर द अदर चार्ज विच इज -6 माइक्रोकूलम्स, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना, सिंपली राइट 6 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, सो वंस अगेन लेट मी रिपीट माई सेल्फ। द पर्पस ऑफ द फॉर्मूला is to provide us with only the magnitude of the force, which means जो आंसर आएगा ना वो इस तरह का आंसर आएगा, F is equal to 88 newtons. This answer is just telling us कि जो फोर्स एग्जिस्ट करता है उसका मैग्नीट्यूड इतना है, एंड दैट इज द मेन रीजन फॉर अप्लाइंग द फोर्स। दैट इज द फॉर्मूला इज ओनली मेंट टू प्रोवाइड अस द मैग्नीट्यूड, नॉट द डायरेक्शन। तो अगर आपको डायरेक्शन फिगर आउट करना है ना, तो डायरेक्शन का काम आप लोग अपनी ओ लेवल्स की वर्किंग से कर सकते हो। और आई थिंक यू वुड ऑल एग्री कि डायरेक्शन के लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ओ लेवल्स में यू आर टॉट लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो उसकी बेसिस पे these are unlike charges, one positive one negative, so they are bound to attract each other. इसीलिए मैंने डायरेक्शन के बारे में एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिख दिया है। ठीक है, एंड द स्टेटमेंट गोज अबाउट अनलाइक चार्जेस attract, so direction of force must be towards each other. Got it? तो फॉर्मूला जब आप फोर्स का यूज करोगे तो फॉर्मूला इज ओनली सपोज टू प्रोवाइड यू विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, इसलिए while using the formula the sign of the charges must be ignored. तो प्लस या माइनस कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर इंसर्ट कर दीजिएगा। और अगर आपको डायरेक्शन निकालना हो तो वो सेपरेटली फिगर आउट कर लीजिएगा। और डायरेक्शन वर्कआउट करने के लिए ओ लेवल्स का बेसिक प्रिंसिपल यूज कीजिएगा। इफ दे आर लाइक चार्जेस दे मस्ट रिपेल, इफ दे आर अनलाइक चार्जेस दे मस्ट अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। जी, you can also say this is the magnitude of the net force if you want to use this term, Umar. So wording तो सही है। All right. Now, before I continue further, मुझे एक एग्जांपल इसका और भी देना है। So, मैं अगेन एज अ साइड नोट इसका एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, सो वो आप देख लीजिएगा, फिर आगे प्रोसीड करता हूँ। So this is another example for using the formula for electrostatic force. ये वर्किंग देख लीजिएगा। Let's suppose there are two charged spheres. मैं डिटेल्स आपको साथ में लिख देता हूँ। The angle between them is given as 30 degrees. The length of the string is given as 20 centimeters. The mass of the sphere is 0.06 kilograms. The value of G is to be taken as 10. 9.81 use नहीं कर रहा। ठीक है, and the question is saying, given that the system is at rest, calculate Q, that is the charge on each sphere. ठीक है, मैं स्फीयर के चार्ज को Q से लेबल कर देता हूँ। So two charged spheres, they are identical. The mass of each sphere is given to you. The value of G is to be taken as 10. The system is at rest. This is the positioning that is given to you. And yes, Hussein, you can take K as 9 into 10 to the power of 9 if that suits you.
सही है. So two charge spheres, the mass is given to you, the value of g is given to you, the system is at rest, and you are expected to calculate the value of q, that is the charge on each sphere. अच्छा, before I start with the working, uh, मुझे पहले आप ये कीजिएगा, यार ये डिस्टेंस प्रोवाइड कर लीजिएगा यूजिंग कोसाइन रूल बिफोर आई प्रोसीड. यार मैं डिस्टेंस की वैल्यू को आर से डिनोट कर रहा हूँ. मैं पहला काम ये कर लूँ कि आप लोग जरा मुझे आर की वैल्यू प्लीज आयशा फाइंड आउट करके दे दो. मैं पूरी कैलकुलेशन तो नहीं लिख रहा, आपका डायरेक्ट आंसर लिख लूंगा, एंड देन आई प्रोसीड ना. ठीक है, आर का आंसर आ जाए तो जरा प्लीज मुझे बताते जाइएगा. तब तक मैं डायग्राम पे बाकी की वर्किंग कर लेता हूँ. जी आयशा, तुम बेटा वर्किंग करना स्टार्ट कर दो. आर का आंसर आ जाए तो मुझे सजेस्ट कर देना. तब तक लेट मी जस्ट जूम इन, और मैं डायग्राम पे फोर्सेस वगैरह मार्क कर रहा हूँ, तो आप लोग जरा मेरे साथ साथ देख लो. आयशा का आंसर आएगा ना आर की वैल्यू का, तो फिर मैं प्रोसीड कर लेता हूँ. वन ऑफ द फोर्स कैन बी मार्क्ड एज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. ठीक है. द अदर फोर्स दैट कैन बी मार्क्ड इज द वेट. बेटा मास की वैल्यू वाज गिवन एज 0.06 किलोग्राम्स. ठीक है. सो वेट का अमाउंट आपके पास बन जाएगा 0.6 न्यूटन्स. आई एम टेकिंग GS10. जस्ट सेकेंडली, the component which I'm drawing with the dotted line and the angle which I'm marking, वो आप मेरे साथ साथ फॉलो कर लें. कोई स्टेप बताना हो ना रिगार्डिंग द एंगल और एनीथिंग, तो आप मुझे अनम्यूट करके प्लीज बता दीजिएगा, तो मैं आंसर साथ साथ दे दूंगा. ठीक है. एंड द कंपोनेंट व्हिच आई एम राइटिंग डाउन, दैट शुड बी t cos ऑफ 15. ठीक है. तो पहला काम मैं ये कर लूं कि अगर आर का आंसर आयशा ने दे दिया हो ना, तो पहले वो लिख लेता हूँ और फिर आगे प्रोसीड करता हूँ. जी आर का आंसर आ रहा था 10.35. दिस इज इन सेंटीमीटर्स, सो आई विल कन्वर्ट इट लेटर ऑन. ओके. ठीक है. नाउ बेस्ड ऑन द डायग्राम, t cos 15 should be equal to the weight. तो यार यहाँ से जरा t की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आ जाता है, और ये भी मुझे सजेस्ट कर दें. जब तक t का आंसर आ रहा है ना, तब तक लेट मी वंस अगेन जूम इन ऑन टू द डायग्राम. 0.62, इज दैट द वैल्यू ऑफ t? ओके, थैंक यू आयशा. सही. अब लेट्स गो बैक टू द डायग्राम. With the red marker, I'm marking the electrostatic force of repulsion. With the red marker, I'm marking the electrostatic force of repulsion. With the blue markers, I'm marking the horizontal component. The blue marker say force acting to the left, T sine 15, that is the resolution wala component. और red वाले marker से the force acting to the right, that is the electrostatic force of repulsion between the charges. Let me just highlight these two forces for your convenience. The one which I'm highlighting with the pink marker, that is the force obtained through resolution, T sine 15. And the force which I'm about to mark again with the pink marker, that's the electrostatic force of repulsion between like charges. So इनको equate कर देता हूँ. So T sine 15, I'll plug in the value of T later on.
is equal to the electrostatic force. अप्लाई करके देखते हैं. कोई स्टेप पूछना हो तो सजेस्ट कर दीजिएगा, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ. So electrostatic force can be replaced by the term. There is no point in writing Q1, Q2 now because both charges have been labeled as Q. So I'm better off simply writing down the charges as either Q times Q. This is just a better symbolic representation. Or alternately, Q square से भी काम चल जाएगा. Divided by 4 pi E naught R square. So just let me repeat myself. The force which I am highlighting once again, T sine 15, that is the force acting to the left hand side. And the force which I'm highlighting right now, the force acting to the right, that is your electrostatic force. So since the object was in resting position, therefore the leftward force and the rightward force must both be equal to each other. मुस्तफ़ा ने लिखा है, how do we know they are going to repel? मैंने कहा था वर्डिंग में मुस्तफ़ा के आइडेंटिकल चार्जेस हैं. So identical spheres मैंने कहा था. So beta, if the spheres are identical, then the magnitude must be equal and the type of charge must also be the same. सही है. So मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए. वैसे मैंने verbally बोला था, मैं mention कर देता हूँ. ठीक है, तो मैंने mention भी कर दिया साथ में. ओके, सो यार अब t की वैल्यू को बेटा रिप्लेस कर देते हैं. आपने मुझे t का रिजल्ट 0.62 बताया था. चार्ज हमें फाइंड आउट करना है, सो दैट इज अननोन. आर का रिजल्ट आयशा लोगों ने फिगर आउट करके 10.4 बताया था. ई नॉट आप लोग लगा दीजिएगा. 10.4 का मतलब है 0.104 स्क्वायर. ठीक है, और ई नॉट की वैल्यू वाज 8.85 इन केस इफ यू नीडेड, टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -12. ठीक है, सो आई प्लग्ड इन ऑल द वैल्यूज जो आपने मुझे सजेस्ट करी थी. सो टी इज एक्चुअली 0.62, R is 0.104. I've converted that into meters. Q को फाइंड आउट करना है. तो आयशा जी हिम्मत पकड़ो और देखो यार Q कितना आता है. So then I can go back to my working. Again, the formula will only provide us the magnitude of the charge on both the spheres. See, so the working will not tell us whether they are both positive or they are both negative. ये information नहीं आ सकती है. Charge का content आ सकता है, so just the magnitude. Okay, thank you, Aisha. 4.4 times 10 to the power of -7. All right, let's proceed on further. Okay, I'm moving back to the main working side. Okay, now proceeding on further. So next is here, since throughout electrostatics we are going to be dealing with protons and electrons, so I guess this is about time कि जहाँ पर आपको values, although exams में given होती हैं, but मैंने एक एक दफा लिख लिए हैं ताकि मुझे use करनी हो तो at least you are aware of these values. Let me just quickly read them through. So mass of the proton, 1.66 times 10 to the power of -27 kilograms. इस टॉपिक में बहुत extensively use होगा. Mass of the electron, 9.11 times 10 to the power of -31. Charge of proton and charge of electron. अच्छा, since proton and electron have the same charges, magnitude wise same होते हैं. The only difference is one is positive and one is negative. So in the exams they allow you, if you don't want to write down the entire value,
Proton can be denoted by the symbol of plus E. Electron can be denoted by the same symbol but with a negative sign. ठीक है, so proton के लिए और electron के लिए a symbolic representation of plus E and minus E serves our purpose for calculation part at least. Now, इसको अप्लाई कैसे करना है ना कैलकुलेशन में वो देख लीजिएगा. So in the question it says there is a proton and an electron given to you. They are both separated by a distance of r. Question is asking you calculate the ratio of electrostatic force is to the gravitational force, and based on your answer suggest why gravitational forces may be ignored throughout electrostatics. See, so masses की values given है, charges की values given है. You are expected to calculate the ratio of the electrostatic force is to the gravitational force between a proton and an electron, which are separated by a distance of r. And based on your answer, suggest why gravitational forces may be ignored throughout electrostatics. Numbers को follow कर लेना. पहले मैं formulas लिख लूं, फिर values को plug in करके check कर लेते हैं. Okay. So यार gravitational force के लिए this is how we used to write down the result. G m1 m2 upon r square. For this example, I can replace m1 m2 by the following terms. mp for mass of proton, me for mass of electron. These are standardized symbols, so you can kind of use them throughout. ठीक है, तो ये आपका ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला बन गया. सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए ideally it should be q1 q2 divided by 4 pi e naught r square. But since we are dealing with proton and we are dealing with electron, so the charges can actually be copied from the top. So q1 q2 की जरूरत नहीं है. Symbolic representation के अंदर I can get away with writing this. E times E basically, so E square. सही है, साइन को इग्नोर करते थे. So E times E works out to be E square. The gravitation force and the electrostatic force. अब रेशियो निकालना है. I've done that calculation. तो अब जरा कैलकुलेशन फॉलो कर लो. फाइनल आंसर देख लो और आंसर की रीजनिंग को रीड कर लो. ये आप करके जरा ओके करें. कुछ पूछना है तो सजेस्ट कर दें. अदरवाइज फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव कर रहे हैं. जल्दी जल्दी. हाँ, रोहित ने लिखा है चार्ज क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगता है इसमें नहीं, यहां जरूरत नहीं पड़ेगी A2s के अंदर. सो जो AS में किया था ना क्वांटाइजेशन की वर्किंग, उसकी जरूरत यहाँ पर तो नहीं पड़ेगी. वैसे याद हो तो अच्छी बात है, लेकिन वैसे A2s में इतना ज्यादा उसका कोई खास काम नहीं है. अच्छा, रायन ने लिखा हुआ है गिवन इन डेटा बुकलेट. सो तुम रायन किस वैल्यू की बात कर रहे थे? ऑल ऑफ दीज वैल्यूज आर, इफ दैट इज व्हाट योर क्वेश्चन इज, all of these values will be given to you in the data booklet. Yes. So capital G given होगा, E naught given होगा, mass of proton electron given होता है, and charges भी given होते हैं. See? So all of these constants that you're seeing in this question, वो तो सारे के सारे at least given होते हैं. ठीक है, मैं statement सिर्फ read कर दूंगा. So the ratio is coming out to be 10 to the power of 39 is to 1. And based on this answer, we can say the answer indicates that gravitational force
is many times smaller as compared to electrostatic force. Hence, it can be ignored throughout electrostatics. What really is E naught? अच्छा question है. Uh, okay, Hussein, इस तरह से सोचो. Uh, if there are two particles separated from each other, one positive, one negative, in vacuum, see? So the positive and the negative force, or the positive and the negative charge, will have some amount of attractive force between them. ठीक है, एक चीज तो Hussein ये हो गई. Now the attractive force largely depends on the medium where they are present. So the property of that medium called permittivity determines whether or not the attractive force is going to be higher or lower. So let me repeat myself. Two unlike charges placed in a certain medium. The force of attraction that will exist between them will largely depend on the medium where they are placed. So E naught is the property of the medium which determines as to how strong or how weak is going to be the attractive force between two unlike charges. ठीक है, एक और दफा बोल रहा हूं. Think of two unlike charges. Yes, so it will be maximum in a vacuum compared to any other medium. So the value of E naught that was given as permittivity of free space, that E naught is the value that we have established between two unlike charges if positioned in a vacuum. This value will largely be different if the two charges were placed in some other medium. Okay, so the force of attraction between any two charges depends on the property of the medium where they are placed. That property of the medium, which determines how strong a force or how weak of a force is going to exist between unlike charges, that property of the medium is given a special name referred to by the term permittivity. Got it, Hussein? ठीक है, आगे प्रोसीड कर रहा हूं. तो नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो. So the next working is example of how electrostatic force can be used in practical situations. Ibrahim is asking, is anyone recording? Yeah, Ibrahim, on my screen, I can see Ali Asgar recording, Muhammad Usman recording as well, and Umar Raqib is also recording. ठीक है, रोहिल ने सही लिखा आंसर. सो मीनवाइल तुम लोग रोहिल वाला स्टेटमेंट पढ़ लो जो उसने सजेस्ट किया हुआ है. मैं तब तक क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ. So the example of how electrostatic force can be used in practical situations. The diagram shows a model for hydrogen atom. It consists of one proton and in the nucleus and an electron orbiting at a distance r. पहले diagram देख लेना. You have a proton inside the nucleus. You have an electron orbiting at a distance r. Distance r को थोड़ा सा modify करके लिख लेता हूँ. एक सेकेंड ना. This is just a better way of representing the distance r. If you look at this diagram, you might realize that the diagram kind of is similar to a satellite orbiting the Earth or something along those lines. So in this diagram, it's a proton inside the nucleus, and the electron is orbiting the nucleus at a distance r. See now, based on the concept of circular motion, if you are asked to calculate the linear velocity of the electron in its orbit, yes, if you're interested in finding out how much is going to be the linear velocity of the electron in its orbit, so that working can be done as follows. Statements dekh lena. I remember for gravitation, we used to say that it is the gravitational force
which is responsible for providing the centripetal force. So in electrostatics, we should be using the word that it is the electrostatic force which is responsible for providing the centripetal force. तो जो रोहेल ने स्टेटमेंट लिखा था, आई थिंक दैट काइंड ऑफ मेड सेंस. सो मैं उसी वर्किंग से स्टार्ट करता हूँ. ठीक है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स provides the centripetal force for performing circular motion. Hence, electrostatic force is equal to centripetal force. Symbol जरा देखते जाइएगा. Electrostatic force can be replaced by the term Q1, Q2. So I've written E square upon 4 pi E naught R square. And the centripetal force can be replaced by the term mv square upon R. Symbols देख लेना. So me for mass of the electron. ठीक है. So electrostatic force Q1, Q2. So E square upon 4 pi E naught R square. Centripetal force mv square upon R. Simplify आप कर लो. आपके पास वर्कआउट करके लीनियर वेलोसिटी का रिजल्ट आ जाए. ठीक है. So for an electron orbiting a nucleus in case of a hydrogen atom, the linear velocity with which the electron orbits can be worked out using this relationship. अच्छा यार, I'm sure you would all agree. अगर आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, तो surely if they ask you कि आपको इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो आई बिलीव वो काम भी हो जाएगा. सही. सो अगर अगर वेलोसिटी का रिजल्ट आ गया, तो फिर डेफिनेटली आप काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट भी फिगर आउट कर सकते हो. अगेन एज अ साइड नोट, मैं वेलोसिटी के साइड बाय साइड काइनेटिक एनर्जी की वर्किंग भी कर दूं. एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर द आंसर फॉर वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी काइंड ऑफ ऑब्वियस है. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैं ये हाईलाइटेड लाइन जरा पहले इरेज कर दूं, फिर प्रोसीड करते हैं. ठीक है. सो दैट शुड बी हाफ एम वी स्क्वायर. यार, m को यूजुअल फॉर्म में मत लिखना. m के साथ नीचे सबस्क्रिप्ट में e लिख देना टू सिग्निफाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इनटू वी स्क्वायर. ठीक है. आप v की वैल्यू को प्लीज रिप्लेस कर दो. मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ. सो आप v की वैल्यू को जरा रिप्लेस करके देख लीजिएगा. फाइनल आंसर लिखता जा रहा हूँ. अगर आपको सूटेबल लगे ना, तो जरा सिंप्लीफाई करके देख लें. मैंने डायरेक्ट आंसर लिख लिया है. इफ देयर इज एनी टर्म दैट यू वुड लाइक मी टू एक्सप्लेन, तो जरा प्लीज मुझे अनम्यूट करके पूछ लो, या चैट के अंदर लिख कर दे दो. तो अली, मुझे कुछ वो करना है, या आई थिंक अली तुमने खुद ही फॉलो कर लिया. 8 पाई ई नॉट. मुझे लगता है सब सही लिखा था अली, सिर्फ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन तुमने गलती से एक्स्ट्रा लिख दिया था. बाकी आई थिंक तुमने सारे टर्म सही लिखे थे अली. मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन शुड बी रिप्लेस बाय द टर्म आर. हाँ, आई थिंक तुमने सही मेंशन किया है. सो ई नॉट डिवाइडेड बाय, सॉरी, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई ई नॉट आर. सो ये वर्किंग आप लोग जरा फॉलो कर लीजिएगा.
अब मूविंग ऑन फर्दर, okay, so the next working is uh, how can we calculate the angular velocity omega for the electron in its orbit? So once again, the same result. The electrostatic force provides the centripetal force. The electrostatic force can be replaced by the formula Q1 Q2, so E square divided by 4 pi E naught R square. This time around, centripetal force can be replaced by the term mr omega square. ठीक है, और यहाँ से ओमेगा फिगर आउट कर लीजिएगा. सो आई थिंक जरा सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स आप लोग देख लो. ओमेगा का आंसर आ जाएगा. एंड इफ यू आर ओके विद द आंसर ऑफ ओमेगा, then based on omega, you should definitely be able to figure out how much is going to be the time period for an electron orbiting a nucleus. ठीक है, so if you are interested in finding out कि आपके पास टाइम पीरियड कितना होगा, सो ओमेगा का रिजल्ट है, तो टाइम पीरियड कैन बी वर्कड आउट. एक सेकेंड ना, टाइम पीरियड को साइड में कर लेता हूँ. ठीक है, सो obtaining the time period for electron in its orbit. So T is equal to 2 pi upon omega. Replace omega. Replacement I'm hoping आप में से कोई ना कोई कर देगा. Like previous example में अली ने कर लिया था. Replace omega to get. So omega आप लगा दें. मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ. For obvious reasons, they have never asked these formulas directly in your papers, not unless they ask for a derivation. ठीक है, just kind of taken for granted कि इन formulas को इनको डायरेक्टली लर्न करने का कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि कभी डायरेक्टली नहीं पूछे. डेरिवेशन आती है तो उसके साथ ही पूछ रहे होते हैं. ओके, यार मैं 5 मिनट्स रुक जाऊं, फिर जो नेक्स्ट वाली वर्किंग करनी है, विच कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो फिर आके कराता जा रहा हूँ. तब तक एक दो स्टेटमेंट्स है ना किसी के सजेशंस, वो मैं रीड कर लूँ. सो ओके, अली ने फाइनल स्टेटमेंट सही दिया हुआ था, और रोहिल ने कहा है सो अगर डेरिवेशन नहीं कराई हुई हो प्रीवियस पार्ट में, तो वी वोंट यूज देम. यस, तो जब तक वो डेराइव नहीं कराएंगे ना, वो आपसे ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करवाएंगे. ठीक है, तो अगर डेराइव कराते हैं तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि फिर नेक्स्ट पार्ट में इसकी यूटिलाइजेशन है, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लर्न करके जाने की जरूरत नहीं है. ऑलराइट गाइस, सो अब आगे की वर्किंग करनी है. आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स. फिर इस वाली वर्किंग को फॉलो कर लेते हैं. मैं कुछ चीजें मीन वाले रेस कर दूं, उसको फिर दोबारा से रिप्रिंट कर दूंगा.
ठीक है, आता हूँ फिर आगे करा रहा हूँ। तो मैं स्क्रीन को इसी पोजीशन पे छोड़ के जा रहा हूँ। So let me come back in 5 minutes, then I'll continue on from this point. All right. Um, अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वर्किंग। नेटफ्लिक्स पे कल रात को एक मूवी आई थी, आई थिंक कल ही आई थी, द ट्रायल ऑफ शिकागो और समथिंग। किसी ने फॉलो करी? इट्स अ वेरी गुड मूवी। If you haven't watched it, if you get some time, so I guess you should. It's based on a historical background, or they've actually done a pretty good job. It's, I think, by the name of the Trial of Chicago 7. यार छोड़ो, CAI से सारी जिंदगी चलते रहते हैं यार, क्या हो गया? कोई अच्छी चीज आए तो उसको मना नहीं करना चाहिए। ये इट्स ऑन नेटफ्लिक्स, आयशा। अ, एक सेकेंड ना।
Do I have Netflix over here? No, I do. Oh, I do. Yes, it's this one. Can you guys, is the screen getting shared? स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ, आई काइंड ऑफ लाइक्ड इट. मैंने अब पूरी नहीं देखी थी, सोच रहा था आज देख लूंगा. शायद आज टाइम मिलेगा, रात को थोड़ी सी देख लूंगा, लेकिन हाफ द वे देख ली थी. सो आई डिड लाइक द एंटायर कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग. ओके. सो द वर्किंग फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. पहले मैं रीड थ्रू कर लूं, आप पॉइंटर्स देख लेना, फिर इसकी कैलकुलेशंस और इसके फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सो वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड as a region where a charge experiences either an attractive force or it experiences a repulsive force. ठीक है. Second चीज, electric field strength can be denoted by the symbol of capital E. अच्छा, from AS you would remember that you guys did one of the formula for electric field strength as a voltage upon distance. So if you recall that formula, तो उसकी basis पे the units will turn out to be volts per meter. So that's the first unit based on the formula. And then we also did the formula in AS. F is equal to EQ. So from the second formula, you would arrive at the second units, which is Newton per Coulomb. A2s में, they use Newton per Coulomb predominantly more as compared to the first units. But वैसे तो आप कोई भी units use करो, आपकी choice है. But second वाले units को जरा वो ज़्यादा use कर रहे होते हैं, as opposed to the first one. ठीक है. So first of all, it's a region where a charged particle experiences an attractive or a repulsive force, denoted by the symbol of E. Based on the AS formulas, it is measured in units of either volt per meter or Newton per Coulomb. अच्छा, मैं AS वाले फॉर्मूले को इरेज कर रहा हूँ, मेरे काम का नहीं है. At least for the time being. और ये जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ at any point can be calculated using the following equation. So मैं इक्वेशन जरा एक्सप्लेन कर दूं, वो आप देख लीजिएगा. Imagine if I were to ask you, and probably you would remember this, कि suppose करें if I were to give you a source mass की बात कर रहा हूँ, source mass is capital M. And if I were to ask you, calculate gravitational field strength at point P, would you agree कि gravitational field strength अगर आपको calculate करनी हो at the point P, so in the previous topics we had recognized that gravitational field strength can be written down as follows: capital G times M divided by R square. So as long as you remember the formula for gravitational field strength, so then using the same principle, imagine if I were to make the following changes. अब देखें changes क्या क्या कर रहा हूँ, चेक करते जाइएगा. मैं सोर्स मास को रिमूव कर देता हूँ, इसको रिप्लेस कर देता हूँ बाय द टर्म सोर्स चार्ज. ठीक है. Instead of asking you to calculate the gravitational field, what if I were to ask you to calculate the electric field strength? तो wouldn't you agree जो आंसर आपने मुझे सजेस्ट किया था, मैं इसमें माइनर एडजस्टमेंट्स करके इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का आंसर खुद ही फिगर आउट कर सकता हूँ. नो नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला. लेट्स सी क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली डिराइव हो जाएगा. आई डू द नेसेसरी चेंजेस. आई रिमूव जी, I'll replace it with E. So gravitational field strength is replaced by the term electric field strength. अच्छा, और क्या क्या चेंज करना पड़ेगा? I'll remove the source mass, replace that with a source charge. और क्या करूं? I'll replace the gravitational constant
with the electrostatic constant, which is K. So the formula can be directly worked out. And I guess you are better off कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला याद नहीं भी करोगे ना तो भी काम चल जाएगा एज लॉन्ग एज कि आपको ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला याद हो तो बस 3 चेंजेस करने हैं ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ के टर्म को रिप्लेस कर देना विद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सो जी चेंजेस टू बिकम ई सोर्स मास को रिप्लेस कर देना बाय द टर्म सोर्स चार्ज सो कैपिटल एम replaced with the term capital Q and the gravitational constant G should be replaced by the electrostatic constant, which in this case I've written it down as K. So this is one way of writing it down. And if you write down the overall value of K, which I believe आपको याद होगी from the previous slide, तो K की अगर पूरी value को आपको plug in करना हो, which was 1 upon 4 pi E naught, so you can replace that value of K. Let me just make an asterisk over here. तो अगर आप K की value को replace कर दोगे, then the formula for electric field strength works out to be as shown over here. अगर याद करना हो तो डायरेक्टली लर्न कर लीजिएगा अदरवाइज it is far more convenient if you recall the formula for gravitational field strength then you may very well be able to extract the formula for electric field strength as well. So it's up to you कि जैसे आपको सूट करे. So I have taken the longer version, although you can directly remember the formula if that suits you. By longer version, what I mean was I took gravitational field strength into consideration, and from that point, I extracted the formula for electric field strength. Otherwise, just remember the formula directly. Now, in this formula, I'll rewrite this statement, but in this formula, Q represents the source charge and R represents the distance at which electric field strength is to be measured. Okay, so in the formula, Q is the source charge and R represents the distance at which the electric field strength is to be determined. Now, once again, just a while back, when I was discussing the formula for force, I said that the intention of the formula was to only provide you with the magnitude of the force. Likewise, the intention of this formula is also to just provide you with the magnitude of the electric field strength. Just like the force formula, the intention of this formula is also to provide you just with the magnitude, which means, once again, while using this formula, I'll show you how to use it in a while, but for the time being, while using this formula, the sign of the charge is not to be considered. Now, again, students ये question बहुत predominantly पूछते हैं कि सर magnitude तो formula से आ जाएगा good enough, लेकिन what if we want to find out the direction of the electric field, तो फिर वो कैसे determine होगी? So if the formula will not give us, then how can we determine the direction of the electric field? तो उसके लिए I've written down the next statement. So just carefully read this statement. The direction of the electric field can be worked out by using the following rule. मैं दोनों रूल्स को हाईलाइट कर रहा हूं तो डायरेक्शन डिटरमिन करने का काम फॉर्मूले का नहीं है और अगर आपको डायरेक्शन में इंटरेस्ट हो तो वो काम आपको खुद करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा इफ द सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव if the source charge is positive then the direction of the electric field at any point is going to be away from the positive charge. Imagine if I give you a point and if I ask you to mark the direction of the electric field. So away from the positive ka matlab hai, this is how you would mark the direction. ठीक है तो डायरेक्शन का काम फॉर्मूले ने नहीं करना है डायरेक्शन का काम आप खुद करोगे और कैसे करोगे फॉर अ पॉजिटिव चार्ज the direction of the field is always taken to be away from the positive and similarly for a negative charge
At any point, the direction of the electric field is considered to be towards the negative. Okay, so coming out of the positive or away from the positive and going into the negative, that is towards the negative. This terminology is not something new to you. आप लोगों ने O level से पढ़ा हुआ था कि the field lines come out of the positive and they go into the negative. ठीक है, O levels में किया हुआ था. So the field lines come out of the positive and they go into the negative. Hence the statement away from the positive source charge and towards the negative source charge. Let me give you an example. So imagine if the question is given to you as follows. इसको वापस लिख देता हूं. So a source charge is given to you 20 microcoulombs. A point P is given, which is at a distance of 12 centimeters away from the source charge. And the question is asking you, calculate the electric field strength at the point P. So to calculate the electric field strength at any given point, while applying the formula, ignore the sign of the source charge. तो जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आई हैव रिटन डाउन द फॉर्मूला. तो जब आप फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो चार्ज की जगह पर प्लस माइनस कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. जस्ट द टर्म 20 माइक्रोकूलम, सो 20 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -6. ठीक है, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव. एंड द आंसर दैट यू विल गेट, मैंने यूनिट स्टॉप से कॉपी किए हुए. सो द आंसर विल गिव यू, एज आई सेड, just the magnitude of the electric field strength. और अगर आपको डायरेक्शन में इंटरेस्ट हो, सो डायरेक्शन आप ड्रॉ करके दिखा देना. मैं बना रहा हूं, आप देख लीजिएगा. सो इट्स अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज. इट्स अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज. सो द डायरेक्शन मस्ट बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव. ठीक है, तो ड्रॉ करके बना दीजिएगा ऑन द डायग्राम. अदरवाइज डायरेक्शन वर्डिंग्स में लिख देना, जो भी आपको सूट करे. ठीक है, सो फॉर्मूला इज सपोज टू गिव यू द मैग्नीट्यूड, and as far as direction is concerned, that needs to be worked out separately by you. And on which basis would you work out the direction? So for a positive source charge, the direction of the electric field will always be away from the positive, whereas for a negative source charge, the direction will always be towards the negative. ठीक है, रायन तुम्हारा स्टेटमेंट सही है. इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट चार्ज, बिल्कुल सही लिखा हुआ है. All right, let me give you another example. Calculate the magnitude and direction of electric field strength at P due to two source charges placed at X and Y. अब ये थोड़ा सा केयरफुली देख लेना.
There is one source charge. इसकी value is given to you as 10 microcoulombs. This is placed at X. There is another source charge, the value of which is minus 6 microcoulombs. This is placed at Y. And the point P is given to you. आपको P वाले point पे electric field strength calculate करनी है. I need to give you some distances to work around with. तो वो दे देता हूँ. This is 8 centimeters from one side. And this is 6 centimeters. ठीक है, so अब यार कैसे फिगर आउट करेंगे ना P वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, उसकी वर्किंग देख लेते हैं. ये क्वेश्चंस काफी दफा ऑन एंड ऑफ एग्जाम्स में आ रहे होते हैं. तो वर्किंग को स्टेप वाइज कैसे करना है ना, जरा वर्डिंग्स मेरी फॉलो कर लेना. फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द पॉइंट P ड्यू टू X. ठीक है, मैं वर्डिंग्स किस फॉर्म में लिख रहा हूँ ना, वो जरा देख लेना. सो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P ड्यू टू X. दिस शुड बी योर आंसर. टेन माइक्रोकूलम्स. आयशा, ये आंसर प्लीज दे देना. 4 पाई E नॉट 0.08 square. This will give me one half of the answer. So this is the answer for the electric field strength at the point P due to the source charge placed at X. Notice the fact, मैंने साइंस नहीं लगाई है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लगाया है. और लेट्स सी कि इसका अमाउंट कितना बनता है. थैंक यू आयशा. 1.4 times 10 to the power of 7. I'm sure you would agree कि मैं इसका डायरेक्शन भी डिटरमिन कर सकता हूँ. सो मैं ड्रॉ कर देता हूँ डायरेक्शन. So since the source charge is positive, so the direction must be away from the source charge. So the direction should be to the right. ठीक है, so magnitude भी आ गया, साथ में डायरेक्शन भी आ गया. सही. अच्छा, यूनिट्स भी लिख ही लेता हूँ. So any of the two units, so either volts per meter or newtons per coulomb, preferably newtons per coulomb because that is what they use mostly in A2s. और direction, so positive charge के लिए away from the positive. So यार ये डायरेक्शन आ जाएगा. This concludes one half of the working. ओके, अब दूसरे वाले चार्ज पार्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ. सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये सेकंड स्टेप है. कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगेन एट द सेम पॉइंट P ड्यू टू द सोर्स चार्ज प्लेस्ड एट Y. तो अब दूसरे वाले चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में देखना. अगेन द सेम फॉर्मूला, अगेन इग्नोर द नेगेटिव साइन एंड दिस शुड बी योर रिजल्ट. सो मैं माइनस नहीं लिख रहा, सिंपली 6 माइक्रोकूलम्स. 4 पाई E नॉट. Distance is 6 centimeters, so 0.06. So this gives you the other answer. Janab Aisha. Okay, thank you, yaar. 1.5 times 10 to the power of 7 newtons per coulomb. Magnitude तो आ गया. अच्छा, अब direction mark करना है. So since the other source charge is negative, and for negative, the direction must be towards the negative.
तो टूवर्ड्स द नेगेटिव का मतलब है वंस अगेन टू द राइट। ठीक है, सो मैंने टॉप वाले डायग्राम पे एरोस बनाए थे, फिर बाद में उन एरोस को नीचे वाली वर्किंग के ऊपर ट्रांसलेट कर दिया है। अली, तुमने मुझे फर्स्ट वाले का आंसर दिया है ना, क्योंकि तुमने 1.4 दिया है, सो आई एम अज्यूमिंग कि तुमने शायद फर्स्ट वाले का आंसर दिया है, नॉट द सेकंड वन। एम आई राइट? जी अली, इफ यू देयर। नो सर, 1.5 इज राउंड ऑफ। ओके, चलो फिर सही है, मैं 1.5 रहने देता हूँ, मैं चेंज अब नहीं कर रहा बिकॉज मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ ना, दैट्स फाइन। सो गाइस, वो सेकंड वाला आंसर प्रॉब्ली शायद थोड़ा सा राउंडेड ऑफ आंसर है, बट दैट्स ओके फॉर मी। इट वाज 1.498। ओ सही है, फिर तो ठीक है। और 1.498 करेक्ट टू 2SF, फिर तो सही है। अच्छा, सो एज आई वाज सेइंग, मैंने डायरेक्शंस मार्क कर दिए हैं और मेन डायग्राम पर से एरोस मिटा देता हूँ, आई डोंट नीड देम। सही है, सो रिजल्ट आ गए। अब फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। सिंस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स इस तरह से लिख लेता हूँ। एट पॉइंट पी, सॉरी यार, इसकी निब को थोड़ा सा लाइट कर दूं। एट पॉइंट पी, the resultant electric field strength due to source charges at x and y can be obtained by vector addition of the above values। ये वर्डिंग मेरा ख्याल है फॉलो कर सकते हैं ना, कि बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स के डायरेक्शंस वर पॉइंटिंग टू द राइट। तो थिंक ऑफ दिस एज टू वेक्टर्स, और इमेजिन करें कि आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो, एंड इफ बोथ वेक्टर्स आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो आप क्या करोगे? सो ऑफ कोर्स, जिस तरह वेक्टर ट्रीटमेंट करते हो कि इफ देयर आर टू वेक्टर्स पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, देन द रिजल्टेंट इज वर्कड आउट बाय सिंपली एडिंग द टू ऑफ देम। तो बिल्कुल वही काम कीजिएगा कि द रिजल्ट कैन बी obtained by simply applying vector addition rule for the above two values. So since both arrows are pointing in the same direction, so resultant obtain करने के लिए simply add the two of them together. And this is what the final answer or the final outcome would look like. यहाँ पर काफी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि सर क्या हमेशा ऐड करेंगे? तो एक सेकेंड ना, so the electric field strength at P is going to be the vector addition of the two answers. It amounts to this result. And the direction is going to be to the right. Now to answer this question कि क्या हमेशा ऐड करेंगे, तो आई थिंक इसका बेस्ट अप्रोच ये होगा कि जिस केस में द टू एरोज आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, तब तो ऐड करेंगे। बट इमेजिन इफ द क्वेश्चन वर टू बी स्लाइटली चेंज्ड। मोहित ने सही लिखा हुआ है, पहले आप लोग मोहित का स्टेटमेंट पढ़ लो। मोहित, इसको प्राइवेटली के बजाय एवरीवन पे लिख लो, ताकि बाकी लोग भी स्टेटमेंट फॉलो कर लें। फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूं, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल बनाता हूँ। मोहित, जरा दोबारा से वो कर लो। जी, सो मोहित स्टेटमेंट इज करेक्ट। There is no direct formula to calculate the resultant electric field strength due to two or more charges. Let's put it this way, है ना? So दो charges हो या दो से ज्यादा charges हो,
देयर इज नो डायरेक्ट अप्रोच विथ रिगार्ड्स टू उसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे. जस्ट लाइक इन वेक्टर्स, है ना, व्हेन देयर आर टू और मोर वेक्टर्स, तब डायरेक्ट आंसर नहीं निकालते थे, आपको रिजल्टेंट निकालने के लिए पूरी वर्किंग करनी पड़ती थी. द सेम थिंग अप्लाइज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल. So whenever you have two or more charges, then the resultant electric field strength can't be worked out directly, stepwise करना पड़ेगा. सही. और फिर एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, वो आपको डिटरमिन करना पड़ेगा by looking at the directions. So in this example, which was a fairly simple example, both arrows are pointing in the same direction. Hence मैंने resultant निकालते हुए vector addition कर ली है. But I'm sure you would appreciate कि अगर मैं इस क्वेश्चन की वर्डिंग को चेंज कर दूं, थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूं ताकि मुझे नेक्स्ट वाली डायग्राम का चांस मिल जाए. इमेजिन करें कि अगर सिनेरियो इस तरह का होता. मैं ट्राई करता हूँ, मैं ऊपर से ही कॉपी कर लूँ, बल्कि नहीं, चलें अलग नंबर्स यूज कर लेता हूँ. सपोज करें कि अगर इस तरह की कोई सिनेरियो होता. देयर इज अ चार्ज ऑफ प्लस 30 माइक्रोकूलम्स ऑन वन साइड, a second charge also positive plus 8 microcoulombs on the other side. The point P is located somewhere in the middle, and the distances are given to you. This is 12 centimeters, that is 6 centimeters. The question is the same. Calculate electric field strength at P due to two source charges placed at X and Y. So just like what Mohit suggested a while back, in net electric field strength निकालने के लिए there is no direct formula, तो step by step करना पड़ेगा. So the working would once again be electric field strength at P due to X. ठीक है, so based on the formula, again, just the magnitude to be taken into consideration, ignore the sign. अब मैं E नॉट नहीं लगा रहा, आई एम होपिंग कि वो आयशा खुद अपनी कैलकुलेशंस में लगा लेगी. ये आपके पास फर्स्ट रिजल्ट आ जाएगा. तब तक मैं डायरेक्शन मार्क कर लूं जब तक आयशा मुझे आंसर दे रही है. अगेन फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, इट शुड बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव. सो ये हो जाएगा. तो मैग्नीट्यूड आ जाए, डायरेक्शन वुड बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव. डायरेक्शन मैंने मार्क कर दिया है. लेट्स सी मैग्नीट्यूड कितना बन रहा है. गाइस मुझे 1 मिनट देना बिफोर आई स्टार्ट विद द मैग्नीट्यूड. ओके, 1.9 कर देता हूँ टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ. यार एक्चुअली 19 नहीं होगा आयशा, इट वाज माय मिस्टेक. आई रोट 10 टू द पावर ऑफ 6. I should have rather written 10 to the power of minus 6. So I just noticed that now. So I guess इस वजह से शायद आपका आंसर गलत आ रहा होगा. So I'm presuming कि 1.9 तो सही होगा. 10 का पावर यार आप वापस कर लो, सॉरी फॉर दैट. और मेरा ख्याल है 7 आ जाएगा. Meanwhile, I've marked the direction. So the rest of you guys, while she's doing the working, the rest of you guys can follow that the direction should be away from the positive. So that's towards the right. और आयशा ने चेंज करके आंसर बता दिया. सही है. एंड लाइकवाइज जब आप दूसरे वाले चार्ज की पर्सपेक्टिव पे वर्किंग करोगे ना, बिफोर आई कंटिन्यू विद द वर्किंग, यू ऑल नो कि अब यहाँ एडिशन नहीं होगा, रादर सब्ट्रैक्शन होगा. So electric field strength at the point P due to a source charge at Y. So again 8 microcoulombs. एक सेकेंड ना.
So 8 times 10 to the power of minus 6, 4 pi E naught. Distance is 6, so 0.06 square. So beta, the result that we are getting over here amounts to, अच्छा जब तक मेरे पास आंसर आता है ना, तब तक the other charge is also positive. Have a look at the diagram. So the direction must be away from the positive, which means ये please arrow देख लीजिएगा. So the direction must be away from the positive. So this time to the left hand side. ठीक है, away from the positive. So ये arrow को जरा recognize कीजिएगा. So while I'm writing down the answer, the arrow is now going to point the other way around. The answer nonetheless was coming out to be 1.99. So that is 2 into 10 to the power of 7. रायन, मैं तुम्हारे स्टेटमेंट को अभी कंफर्म करता हूँ. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, नाउ रिजल्टेंट निकालना था. ठीक है, सो रिजल्टेंट के लिए बेस्ड ऑन द एरोज, आई थिंक यू वुड अग्री कि मुझे लिखना चाहिए अप्लाई वेक्टर सबट्रैक्शन. दैट इज larger minus smaller, and the final direction will follow the one which has larger magnitude, which in this case should be, so one is 2 times 10 to the power of 7 to the left, the other one is 1.9 times 10 to the power of 7 to the right. तो फाइनल आंसर आपका ये बन जाएगा. larger larger minus the smaller, and the final answer will follow the arrow of the larger one, that is this. जी, अब रायन ने स्टेटमेंट एक लिखा था, can we say that if the source charges are unlike, they would add up? If they are like, they would subtract? जी, जरा सब लोग, okay, towards the west भी सही है, उमर की वर्डिंग भी सही है, towards the left, towards the west भी सही है. सब लोग जरा रायन का स्टेटमेंट देखो, बिकॉज बहुत सारे लोग इस कंक्लूजन पे अराइव कर जाते हैं. सब लोग प्लीज बिफोर आई कंक्लूड विद टुडेस क्लास ना जरा रायन वाला स्टेटमेंट देख लो. ही इज सेइंग, can we say that if the source charges are unlike, then we need to add them up? If they are like, uh, then we need to subtract them. Ryan, इसमें एक issue होगा, and let me explain that. Imagine there is a positive charge as shown. Imagine there is a negative charge as shown. And imagine the point P is marked as given to you. अब रायन इसमें मसला ये होगा कि जब तुम पॉजिटिव के कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे, पॉजिटिव के रेफरेंस से बात करोगे, so the arrow should be away from the positive. और जब तुम नेगेटिव के कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे, so the arrow should be towards the negative. है ना? अब देखो गौर से, तुम ऐड कहोगे तो भी गलत है, तुम सब्ट्रैक्ट कहोगे तो भी गलत है, because they are neither pointing in the same direction nor are they pointing in the exact opposite direction. तो फिर इस केस में
या इसके जैसे केसेस में तुम्हारा स्टेटमेंट नहीं चलेगा। ठीक है, तो जो पॉइंट मैंने पी मार्क किया है ना, वो कहाँ मार्क किया है रायन, वो मैटर करता है। अब अगर मैंने यही पी वाला पॉइंट चार्जेस के बीच में मार्क किया हुआ होता, लाइक रोहेल इज सजेस्टिंग, तो तुम्हारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता। सो लेट मी show that same working once again, where the point P was marked in the middle of the two. Okay, so as long as the point P is located on the line joining the two charges P and on the line joining the two charges, as long as the point P is located on the line joining the two charges, then I guess Ryan, तुम्हारा statement सही है. Positive के reference से it should be away. Negative के reference से it should be towards. So तुम्हारा statement बिल्कुल सही लग रहा है कि we need to add them up. So far so good. सो रायन, आई थिंक जो तुमने स्टेटमेंट लिखा है ना जनरलाइज्ड फॉर्म में, आई थिंक वो स्टेटमेंट इस तरह से लिखोगे या याद करोगे तो ज्यादा सेंसिबल है कि इफ द पॉइंट पी इज लोकेटेड ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, देन योर स्टेटमेंट साउंड्स राइट कि अनलाइक चार्जेस होंगे तो ऐड करना पड़ेगा, लाइक चार्जेस होंगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बट योर स्टेटमेंट विल नॉट होल्ड ट्रू इफ द पॉइंट पी इज लोकेटेड एनीवेयर एल्स. ठीक है, सो रोहेल ने जिस तरह लिखा था ना, तुम रोहेल का सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेना, इट मेड मोर सेंस. Only if source charges and particles are in line with each other. तो जब तक point P is located in the same line as the charges, तब तक रायन तुम्हारा statement सही है. Otherwise, that cannot be used as a standardized statement. So if P is not on the line, we will use resolution of vectors. Yes, we will use resolution of vectors, उमर, जो मुझे next class में कराना है. ठीक है guys, मैं ये last diagram erase कर रहा हूँ. इसका ये example मुझे next class में कराना है. तो जो मैंने ड्रॉ किया था ना, उसको दोबारा बना दूंगा नेक्स्ट क्लास में. मुझे एक्चुअली वो एग्जाम्पल कराना भी है. इस वाले पॉइंट पे यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ.